हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ज्ञानदूत कार्यक्रम में स्वागत है। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा स्नातक विषय पर ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप सभी लेक्चर्स ध्यानपूर्वक सुनिए एवं डाउट्स चैट बॉक्स में लिखिए। आपके डाउट सेशन में क्लियर किए जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। I am Dr. Rashmi Sharma, Associate Professor Zoology, SPCGC अजमेर। आर्थ्रोपोडा शब्द आर्थ्रो प्लस पोडा से मिलकर बना है। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेस और लेग्स मीन्स इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस इनमें प्रेजेंट होते हैं। काइटिनस क्यूटिकल इज प्रेजेंट एज एक्सोस्केलेटन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सीलोम is present and coelom is present in the form of hemocoel. Striated muscle fibers which are voluntary are present. Alimentary canal is well developed. Alimentary canal इनमें well developed होती है. Circulatory system is of open type. Heart is dorsal. Heart dorsal होता है. Veins are present and blood spaces are also present. Coelom is limited to reproductive organs and excretory organs. Cilia are absent. Respiratory organs are well developed. Respiration is with the help of gills, trachea or book lungs. Excretion is with the help of green glands, coxal glands or Malpighian glands. Excretion green glands, coxal glands और Malpighian glands के द्वारा होता है. Nervous system, brain is present in head and ventral nervous system is present. Sense organs, simple eyes, compound eyes, chemoreceptors and touch receptors are present. Now comes classification of arthropoda. Classification of arthropoda में arthropoda को सब phylums में divide किया गया है. Number 1 Trilobitomorpha, number 2 Chelicerata, number 3 Mandibulata and number 4 Onychophora. 4 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है आर्थ्रोपोडा को। सब फाइलम 1 है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। ये समुद्री जीव हैं, सी लिविंग एनिमल्स। दीज आर ऑल एक्सटिंक्ट, ये सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बॉडी वेल डेवलप्ड, इनकी बॉडी वेल डेवलप्ड थी। प्रोसोमा ओपिस्थोसोमा 2 भागों में बटी हुई थी, प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा। 1 पेयर ऑफ सेगमेंटेड एंटीनी प्रेजेंट। अपेंडेजेस इन ऑल सेगमेंट्स, सारे सेगमेंट्स में अपेंडेजेस प्रेजेंट थे। और इसका एग्जाम्पल एग्नोस्टस, ट्राइएथ्रस एंड डेल्मेनाइट्स, ये इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं। और सब फाइलम 2 है क्वेलिसेरेटा। क्वेलिसेरेटा में बॉडी वेल डेवलप्ड, प्रोसोमा एंड ओपिस्थोसोमा 2 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। प्रोसोमा सिफेलोथोरैक्स से मिलकर बना है, सिफेलोथोरैक्स भी कहा जाता है प्रोसोमा को। और ओपिस्थोसोमा जो है वो एब्डोमेन कहा जाता है। एंटीनी एब्सेंट होते हैं इनमें, कैलिसरी प्रेजेंट होते हैं और पेडिपेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेग्स प्रेजेंट ऑन प्रोसोमा एंड एब्सेंट ऑन ओपिस्थोसोमा। जो अपर एंटीरियर पार्ट है प्रोसोमा, उसमें लेग्स प्रेजेंट होते हैं और पोस्टीरियर पार्ट जो है ओपिस्थोसोमा, उसमें लेग्स एब्सेंट होते हैं। Subphylum Chelicerata divided into 2 classes, Merostoma and Arachnida. Chelicerata को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, Merostoma and Arachnida. Other 2 subphylums arthropoda के जो है वो है Mandibulata and Onychophora. Chelicerata को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, Number 1 Merostomata, Number 2 Arachnida and Number 3 Pycnogonida. Number 1 class is Merostomata. इसके characters हैं, these are sea living. 4 to 6 pairs of appendages are present in mesosoma. Respiration is with the help of gills. Abdomen ends in tail-like structure. Compound eyes are well developed. Compound eyes इनमें present होती हैं। और इसके examples हैं king crab, जिसे कि हम lemulus भी कहते हैं। This is the only live animal of the group and all other animals are extinct.
इसका जो किंग क्रैब एनिमल है और लिम्यूलस, ये सिर्फ लाइव एनिमल है। बाकी सारे जो एनिमल्स हैं इस ग्रुप के क्लास मीरोस्टोमेटा के, वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास इज एरेक्निडा। दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं स्कॉर्पियन, स्पाइडर, माइट्स एंड टिक्स। Characters: Prosoma has 2 chelicerae, 2 pedipalp and 4 pair of legs. Abdomen: no appendages. Appendages are absent in abdomen. Respiratory organs are book, lungs and trachea. Eyes are simple. Excretion with the help of coxal glands or Malpighian tubules. Oviparous or viviparous means they are egg-laying animals or giving birth to young ones. Divided into 9 orders. एरेक्निडा जो है उसे 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 स्कॉर्पियोनिडा, नंबर 2 एरेनिडा, नंबर 3 पेल्पिग्रेडी, नंबर 4 सोलिफ्यूजी, नंबर 5 पेडिपेल्पी, नंबर 6 स्यूडो स्कॉर्पियोनिडा, नंबर 7 ओपिलियंस, नेक्स्ट नंबर 8 पोडोगोना, नंबर 9 एकेरिना जिसमें कि माइट्स और टिक्स आते हैं। दिस इज डिवाइडेड इनटू 9 ऑर्डर्स स्कॉर्पियोनिडा। एग्जाम्पल्स आर ब्यूथस, पेलेमनियस एंड वेजोविस। एरेनिडा एग्जाम्पल्स आर एजेलिना, लाइकोसा, सॉल्टिकस, एकेरेनिया। नेक्स्ट इज पेल्पिग्रेडी, example is Kinenia. Next, fourth is Solifugi, example Galeodus and Rhogodus. Fifth is Pedipalpi or Europygi, example Tarantula, Mastigoproctus, Theliphonus. Sixth is Pseudoscorpionida, example Califer. Seventh, Opilionis or Phalangida, example Gado, Phalangium, Oligolophus, Ricinulae or Podogona, example is Ricinoides, Cryptocellus. Ninth is Equirina. Examples of Equirina are mites and ticks, Dermacenter, Trombicula, Ixodes, and Sarcoptes. Third class of Chelicerata is Pycnogonida. These are also known as sea spiders. इनको समुद्री मकड़ियां भी कहते हैं। Proboscis present. Proboscis इनमें present होती है। Abdomen reduced. Chelicerae are small. Pedipalp segmented. Male bears eggs in third pair of legs. Males जो होते हैं वो third pair of legs में एग्स को धारण करते हैं। यंग वंस आर पैरासाइट इन इनवर्टिब्रेट्स। इनके जो यंग वंस होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट सब फाइलम, थर्ड जो सब फाइलम है वो है मैंडिबुलेटा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इनका शरीर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। Head divided into 6 segments. Head appendages are 2 pairs of antennae, 1 pair of mandibles and 2 pair of maxillipedes. Compound eyes are present. Biramus appendages are modified for different functions. Respiration is with the help of gills, skin और respiratory tubules. Respiration जो है gills के द्वारा या स्किन के द्वारा या रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। मैंडिबुलेटा इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। मैंडिबुलेटा सब फाइलम जो है उसे 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। नंबर 1 क्रस्टेशिया, नंबर 2 डिप्लोपोडा, नंबर 3 काइलोपोडा, नंबर 4 पोरोपोडा, एग्जाम्पल इज पोरोपस, नंबर 5 सिम्फाइला। इन सिम्फाइला head and abdomen. Abdomen bears 14 segments. An example is Symphylela. And last is Insecta, which is also very important. Now comes characters of class Crustacea. These are aquatic animals
Body is divided into cephalothorax and abdomen. Carapace, exoskeleton, heart and known as carapace. Appendages are biramous. Respiration, body wall or gills. Respiration is with the help of body wall or gills. Excretion is with the help of green glands or coxal glands. Male and female are separate and these are egg-laying. Development is incomplete. Class Crustacea is divided into 8 subclasses. Number 1 subclass is Cephalocardia. Example is Hachiconiella. Second subclass is Brachiopoda. Brachiopoda has 4 orders. Third subclass is Ostracoda. Example are Cypress and Cytherella. Next subclass is Mystacocardia. Example is Derochilocaris. Next subclass is Copoda. Example is Cyclops, which is well known. Next subclass is Brachyura. Example is Argulus. Next, seventh subclass is Cirripedia. 5 orders of Cirripedia are there. Next subclass is Malacostraca. Malacostraca has 6 orders. Brachiopoda has 4 orders. Anostraca, carapace absent. Stalked eyes, eyes जो है वो stalked होती हैं. Caudal style unsegmented, and these are also known as fairy shrimps. Example are Brachypus and Artemia. Order 2 is Notostraca. Dorsal shield is present. Eyes are not stalked. Segmented tail is present. Example tadpole shrimp and Lepidurus. Order 3 is Conchostraca. Dorsal shield is bilobed. Eyes are not stalked. Antenna big, biramous, and helps in swimming. Tail non-segmented and nail-like. Examples are nail shrimp, Cyzicus, and Asteria. Order 4 is Cladocera. Dorsal shield is bilobed, also covers the trunk. Eyes are not stalked and jointed. Antennae are big, 2-branched, and help in locomotion. Tail is non-segmented and nail-like. Example is Daphnia and Sida. Daphnia से हम भली भांति परिचित हैं. Cirripedia, order 1 Thoracica. These are not parasite. Alimentary canal is present. 6 pair of thoracic legs are present. Adult attached to hills. Examples are Lepus and Balanus. Order 2 is Acrothoracica. These are small sized, live in whole of mollusca. Thoracic legs less than 6 pairs. Example Alcipe. Order 3 is Ascothoracica. These are parasites. Alimentary canal is present. 6 pair of thoracic legs are present. Mouth parts for sucking. An example Dendrogaster and Synagoga. Order 4 is Apoda. Parasites. Bisexual. Thoracic legs are present. Anus is absent. Mantle is absent. Order 5 is Rhizocephala. These are parasites on Decapoda crustaceans. Body is degenerated. Appendage is absent, not segmented. Alimentary canal is absent. Their structure is fungus-like, and well-known example is Seculina and Peltogaster. Now comes 8th subclass, that is Malacostraca. Order 1 is Nebeliaceae. These are primitive. Bilobed carapace is present. 7 abdominal segments are present. 1 pair of tail appendage. Thoracic appendages are leaf-like, and example is Nebelia. Order 2 Mysidaceae. Body is long and transparent. Dorsal thin.
Gills are absent. 2 pair of appendages from maxillary legs. Example is mysis. Mysis is very well-known example. Amphipoda, body is long, carapace is absent. These are scavengers. Example is Camerus and Cuprella. Next, Isopoda, body compressed, dorsal shield absent. Example Oniscus and Papyrus. Fifth order is Stomatopoda, dorsal shield small. These are present in seawater. Abdomen is broad. Respiratory organs on abdominal appendages. Example is Squilla. Squilla is also well-known example. Decapoda. Order 6 is Decapoda. Carapace is present. 3 pair of abdominal appendages are present as maxillary legs. This is largest order of Crustacea. Examples are Hippa, prawn, cancer or crab, Eupagerus and Lucifer. Next class, that is second class of Mandibulata, is Diplopoda. Body is long and worm-like. Body divided into head, thorax and abdomen. Head has 5 segments, thorax has 4 segments and abdomen has 50 to 100 segments. Head contains 1 pair of antenna, 1 pair of mandibles and 1 pair of maxillae. Thorax, each segment 1 pair of legs are present. Each segment and abdomen, each segment 2 pair of legs are present. These animals are present in moist places. ये नम जगहों पर उपलब्ध होते हैं. Example Julus, Millipede, Polyzemus. Next class is Scylopoda. Now comes Scylopoda. Body is long, cylindrical, worm-like and flat. जो इनका शरीर है वो लंबा सिलिंड्रिकल होता है, वॉर्म की तरह होता है और फ्लैट होता है. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड थोरैक्स. शरीर हेड और थोरैक्स में डिवाइडेड होता है. 1 pair of antenna on head, 1 pair of mandibles and 2 pair of maxilla are present. Thorax, each segment 1 pair of legs. First pair of legs form poisonous claws. Thorax जो है वो each segment में एक पेयर लेग्स के होते हैं. फर्स्ट पेयर ऑफ लेग जो है वो पॉइजनस क्लॉज फॉर्म करता है. दीज आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट प्लेसेस. ये नम जगहों पर उपलब्ध होते हैं. ट्रेकिया फॉर रेस्पिरेशन. ट्रेकिया पाई जाती है रेस्पिरेशन के लिए. एक्सक्रीशन इज विद द हेल्प ऑफ 1 or 2 pair of trachea. Excretion 1 or 2 pair of Malpighian tubules. And development is direct. Examples are Scolopendra, Lithobius, centipedes and Scutigera. Class 4 is Pauropoda. These are small animals. Thorax, 12 segments are present, each with 1 pair of legs. Antenna is triflagellate. Eyes are absent. These are saprozoic animals. Respiratory organs and heart are absent. Example Pauropus. Class 5 is Symphyla. Small head, thorax. Thorax has 14 segments. 1 pair of legs in each segment of thorax. Respiratory tubules are present in anterior region. Spiracles are present in head only. Examples are Symphylella and Scutigerella. Now comes Insecta. These are biggest class of Arthropoda. Body divided into head, thorax and abdomen. Insecta जो है वो सबसे बड़ी क्लास है आर्थ्रोपोडा की. शरीर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है. हेड formed by the fusion of 6 embryonic segments. Thorax 3 segments and abdomen has 11 segments. Head contains 1 pair of antenna, 1 pair of mandible and 2 pair of maxilla. Mouth parts are different types. सभी ऑर्डर्स में माउथ पार्ट अलग अलग तरह के होते हैं. 3 pair of legs on thorax, so hexapoda. 2 pair of wings are present or absent. Abdominal appendage is absent. Respiratory pigments are absent.
एक्सेप्ट कायरोनोमस लार्वा। कायरोनोमस लार्वा के अलावा सभी एनिमल्स में इंसेक्टा के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। ट्रेकिया नेट फॉर respiration, excretion with the help of Malpighian tubules, sexes are separate, fertilization is internal, development is direct or indirect, 28 orders of insecta are present. Now comes orders of insecta. These are divided into Aterygota and Terrygota. Aterygota wings are absent. Examples are Thysanura, Protura and Collembola. And Terrygota wings are present. Terrygota are again divided into Exoterygota and Endoterygota. Exoterygota examples are Orthoptera, Isoptera, Plecoptera, Ambioptera, Socoptera, Enoplura, also known as Siphonculata. 7th is Melophaga, 8th is Thysanoptera, Ephemeroptera, Odonata, Hemiptera and Dermaptera. Now comes Endoterygota. Examples are Neuroptera, Mecoptera, Trichoptera, Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera, Coleoptera and Siphonoptera. Coleoptera contains beetles. Examples of Lepidoptera are moths and butterflies, Diptera, mosquitoes and flies, Hymenoptera, wasp, ant and bees. These are all orders of Endoterygota. Now comes subphylum 4, that is Tardigrada. Example is Echinuscus or water bear. These are aquatic animals. Size is 1 millimeter. Body divisions not clear from outside. 4 pair of appendages are present. Subphylum 5 is Onychophora. Example is Peripatus. This is well known connecting link between Annelida and Arthropoda. Peripatus जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और Annelida और Arthropoda के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है. बॉडी इज लॉन्ग वॉर्म लाइक. पेरिपेटस का शरीर लंबा वॉर्म की तरह होता है. हेड इज प्रेजेंट. जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट. 1 pair of antenna are present. 1 pair of papilla. 1 pair of simple eyes. 44 pair of nailed legs are present. Respiration is with the help of respiratory tubules. Excretion with the help of kidneys. Reproductive tubules, cilia are present. Fertilization is internal. Development is direct. These are carnivorous animals. Viviparous animals means give birth to young ones. Example is Peripatus. Thank you. This is all about characters and classification of arthropods.